Very good morning, very good afternoon, and very good evening to all of you. My name is Monica. So today I'm here to share my experience that how I joined Army Public School. I'll be sharing the whole process that I've gone through and the few points which actually will motivate you all. Okay, so let me give a brief introduction about you. So my name is Monica. I come from Delhi and I am B.Ed second year student. My B.Ed is still not completed and I am holding the joining letter in my hand. I have to write my B.Ed examination. So कई बच्चों को लगता है कि अगर हमारी B.Ed complete नहीं हो रही है, so can we apply for it or not? Definitely you all can apply for it. As क्योंकि मेरी B.Ed complete नहीं है, so the very factor lies कि I am fresher only, so definitely freshers can also apply for it. Okay, experience भी अप्लाई कर सकते हो बट फ्रेशर्स को लगता है कि पता नहीं हमें दे कंसिडर और नॉट. डेफिनेटली दे कंसिडर यू. ओके, सो दो फैक्टर मैंने क्लियर आउट कर दी. Even if you're in the your final exam year of your B.Ed, you can still apply, and still you're fresher, you can still apply. Okay, so moving ahead, I'll be sharing my journey जो मैंने एक्सपीरियंस करी है in this whole process. We'll start with the preparation phase, then how I gave the form filling phase, and then the interview phase, and then the result phase. Okay, we'll begin with the preparation phase. So preparation phase में आपको around जैन के आसपास एक नोटिफिकेशन आ जाती है कि दैट आर्मी इज़ गोइंग टू कंडक्ट एन ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट. It is basically computer based test which happens across the India, so you can fill it, and the application phase is not even too much, so you can fill that form. You can choose your subject कि आप किस सब्जेक्ट में वो एग्ज़ाम देना चाहते हो. So, मेरा जो पेडागोजी सब्जेक्ट था जो मुझे पढ़ाना था, तो मैंने उसी में ही एग्ज़ाम फॉर्म फिल करा. irrespective of the fact TGT, PGT, PRT, so this is very clear in the form कि आप किसके लिए अप्लाई करना चाहते हो, कौन से सब्जेक्ट के लिए you want to apply. So you do that thing, and afterwards you get the admit card. Then you have to appear for the exam. अब एग्ज़ाम में बेसिकली इफ़ आई टेल यू ऑनेस्टली वहाँ पे जनरल क्वेश्चंस होते हैं, जनरल अवेयरनेस क्वेश्चंस होते हैं. देयर इज़ सम वर्बल टेस्ट, verbal examination test questions, some non-verbal examination test questions, and there are your pedagogic questions, your subject concerned questions. Okay, सो आपने सब सेक्टर को कंसिडर करना है बिकॉज ईच सेक्टर कैरीज अ वेटेज. दैट वेटेज इज गोइंग टू सपोर्ट यू, बूस्ट योर ओवरऑल परसेंटाइल दैट इज रिक्वायर्ड इन द that is required to appear for the interview. It cannot be like you are just preparing yourself for the your subject only. You have to be thorough with all the sectors. ठीक है, कुछ भी छोड़ के नहीं आना है. And as far as remember, there was negative marking also. So be very precise, be very clear कि आप क्या अटेम्प्ट कर रहे हो. जो भी अटेम्प्ट करो सही अटेम्प्ट करो और हर सेक्टर को कवर अप करके चलो बिकॉज योर ओवरऑल परसेंटाइल मैटर्स, राइट. देन आपका रिजल्ट आ जाता है. सो इट्स लाइक you should try to score 50 and above, but yes, 45 percentile wale are also applicable to fill the form, but still I'll suggest you all to score like 50 and above only. बिकॉज देखो बहुत सारे कैंडिडेट्स, अब मान लो आपने APS XYZ में अप्लाई करा है, आपके 45 परसेंटाइल स्कोर आए हैं, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनके काफ़ी अच्छा स्कोर कार्ड है आपके ही सब्जेक्ट में, राइट. सो डोंट गिव योर सेल्फ अ सेकेंड चांस. डोंट गिव योर सेल्फ अ सेकेंड चांस क्या पता मेरा कॉल लेटर आए ना आए. सो प्रिपेयर योर सेल्फ, गिव योर एग्ज़ाम वेरी बेस्ट कि आपका अच्छा स्कोर हो एंड गो अबाउ लाइक 50 ओनली. डेफिनेटली 90 स्कोर भी करो क्योंकि आजकल 90 हर कोई अचीव कर रहा है. ओके, देन कमिंग अहेड, द मोमेंट यू आर होल्डिंग द रिजल्ट इन योर हैंड, now the actual process starts up. So you have to look forward to the schools जहाँ पे you are having your subject and जहाँ पे आपकी सब्जेक्ट में वैकेंसी निकली हुई है. सो देर इज़ अ वेबसाइट AWES करके, AWS करके वेबसाइट है. वहाँ से इन द इंस्टीट्यूशन कॉलम यू कैन फाइंड द होल इंडिया का मैप. वहाँ से इफ़ यू क्लिक एनी स्टेट you'll get the various concerned APS that are in that particular state or the nearby state to you.
if and you have to, you'll directly be taken towards the school website, and in the school website there will be a column of the vacancy and the current recruitment. वहाँ पे you can apply, you can see if your subject is applicable, and if there are cases in which आपका सब्जेक्ट उस आपके नियर बाय स्कूल में applicable नहीं होता, तो go through every state, जिसमें भी applicable हो चले जाओ, fill the form, right? And talking ahead, how the form filling process starts up. So there are some schools जो Google form के through अपना form filling process ले लेते हैं, but there are some schools जो actually पेन पेपर वाला फॉर्म एक्सेप्ट करते हैं. सो यू हैव टू टेक द प्रिंट आउट ऑफ द फॉर्म जो उनकी वेबसाइट पे अवेलेबल रहता है, आपको वो फिल करके देना होता है, एंड यू हैव टू अटैच अ DA ऑफ 100 रुपीज़, and simultaneously you have to post both the things, the form and the DA, to the school. You have to post it, right? There is no second option of online form filling in the few schools. So you have to be very clear कि खाली फॉर्म नहीं देना है, DA भी देना होता है, mentioned रहता है. So go through all the instructions that school is giving you, right? कितना amount of DA they are, usually it is 100 only. So okay, so the moment you have filled your form, उसके about 15 days के अंदर you will get a call from, not in 15 days, somewhat it's 20 and 25 days also. So you'll get a call from the school कि you have been selected, you have been shortlisted, not even selected, you have been shortlisted, and you need to appear for the interview, and so date is being allotted to you, right? So now you have to pack your bags and you have to move to a particular state where you're going to give your interviews. So the moment you go over there, supposingly मेरा 16th of March को इंटरव्यू है, यानी मेरा कल इंटरव्यू है. Let's take a hypothetical situation. Then I have to report to the school by like 7 o'clock. Some school give their own time, but मुझे मेरे स्कूल ने बोला था कि आप 7 o'clock report कर देना. So I reported to the school with all my documents in hand. There were some photocopies also available along with some photographs, my passport size photographs that I took along. So yes, I'm so sorry. So आप अपनी photograph भी लेके जाते हो, and your old documents that you carry in yourself. So the moment you take your all documents, आपको एक sitting area, there is some hall type, वहाँ पे आप सभी candidates को बैठाया जाता है. The one by one there is a teacher who actually sees the list and marks your attendance. Definitely अगर schools आपकी attendance mark हो रही important है. So your attendance will be marked. He'll call out your subject name. So be thorough कि आपका subject सही recall वो लोग कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं. Okay. Then after this, the moment it is done, थोड़ी देर बाद ही the interview process starts. The moment the board is settled, the interview process starts. So in my case, I went to the school at 7, and then my interview actually started by 7:30 itself. It was very early. So मेरे से पहले 4-5 कैंडिडेट थे, एंड बाद में आई वॉज इन. सो उसके बाद इंटरव्यू प्रोसेस जब स्टार्ट हुआ, सो इट इज़ लाइक बोर्ड ऑफ 12 to 15 people, 12 to 15 people, which includes few teachers, the head of the department, the concerned subject you are going to apply, and then there are few officers who are who are holding the academic block of that particular school. They are from the forces only, maybe Navy, Army and Air Force. मेरे case में they were officers from Army only, right? So there were principal also sits in the board, and subject teacher sits in the board. So all in all there are 15 people that sits in the board, around 15 only. So basically board जो होता है एक सेमी सर्कल में रहता है, एंड यू आपके और बोर्ड के बीच में डिस्टेंस इज क्वाइट लार्ज. सो आप ऐसा मान के चलो, बहुत कम से कम मेरे केस में इसको 35 से 40 मीटर की दूरी थी, इतना डिस्टेंस था. माई चेयर वॉज प्लेस्ड प्रीटी फार, so they can completely see me, how I'm sitting, how my body structure is all about, how I'm speaking, am I loud or not. So everything matters. Then the board actually calls your name, and then he says कि introduce yourself to the board. You have to introduce yourself to the board जो भी आप prepare कर कर आए हो.
ऑनेस्टली सेइंग मैंने कुछ ऐसा प्रिपेयर नहीं करा था. व्हाट आई एम गोइंग टू से, इट वाज वेरी रैंडम. So it's good if you go by preparing yourself, but I didn't did it. It was very random. I just told them about myself, from where I come, and then um, my graduation, from where I've done my graduation, my post graduation, how my beard is going on, and yeah, the few hobbies of yourself. ठीक है. उसके बाद the board asked me about कि okay, so you tell me why this is your hobby. So I informed them that because I love to do this in my spare time and I enjoy doing it, and it's not the hobby that I've developed it. It's the hobby that I'm carrying since my childhood, and it's developing. I'm growing in this sector also. So he asked me then, okay, so okay, so basically I'm from Delhi. So I gave my interview in Maharashtra. So then the board asked me, so from Delhi to Maharashtra, were you comfortable coming? So I said yes, I'm very comfortable coming to Maharashtra, and I'm loving Maharashtra actually. It's very peaceful place. Delhi is very populated, polluted, right? So then they asked me, okay, so ma'am, can you so there were questions given to me, situation based questions given to me. It was the principal of the school. The principal of the school asked me, supposingly you have to announce a chapter, a personal hygiene to the students. So how you will do it? So I said them, ma'am, I'll do this by so and so procedure. पूरा मैंने अच्छे से बताया उन्हें. Then she said कि supposingly now I'm not giving any class to you. How now you will do it? So I was like, okay, so there is no class being allotted to me, but still I have to introduce the same chapter. So I said, okay ma'am, अगर मैं starting वाला phase मान के चलूँ, the attendance वाला time, where I actually get time 15 to 20 minutes time to interact to students. So period of time frame में, you have to be mentally prepared to the board. They can ask you situation based questions. There are times when they don't even ask your pedagogy questions, your subject concerned questions. So I said, okay, so this I informed them कि मैम मैं attendance वाले time period में I'll introduce the chapter, the basic concern, the few guidelines, and by so and so procedure. That's up to you. That's actually up to you. I'm not going to give you रट्टे वाली line कि ऐसा ऐसा ही बोल के जाओ. That's completely up to you. What all I'm trying to say, just be prepared, be mentally prepared, क्योंकि it's up to them how whatever they ask you. Okay. Then one of the board member asked me um, how you will introduce water, um, water wala concept in the concept of like science and in geography. दोनों के कंटेक्स्ट में मुझे बताओ. तो मैंने बताया कि साइंस में कंटेक्स्ट में आई एक्चुअली आई एम अ साइंस स्टूडेंट, तो मुझे इतनी डिफिकल्टी नहीं हुई. द स्टेट ऑफ मैटर, राइट. एंड ज्योग्राफी के कंटेस्ट में मैंने वो ओशंस वाले कंसेप्ट बता दिया था बच्चों को, एंड द इवेपोरेशन वाला कंसेप्ट ऑल्सो. दो कंसेप्ट मैंने बोले थे, मैम विच वन यू वुड लाइक टू. सो दे सेड कि ओके विच एवर यू कंफर्टेबल विद. Then they asked me questions from the room. Now I'll tell you, दो questions ही मेरे pedagogy based थे. उसके बाद they stopped asking me questions from my pedagogy. Now it was random questions. So one of the officer actually asked me why the AC is placed upwards. So I knew it, so I answered it. Then again there was one question. I have to tell there was one register kept over there. So they asked me how you will, decorate it. So I said them, ki, sir, I'll do by this and this. And then another officer came up and then he said, ki, how you will come up with your learning to the schools. So whatever you have done, whatever you learned from Delhi University. So I said them, ki, do, I, I'll do by this criteria. I shared my own criteria. So then the principal was like, ki, okay, so in case even if I selected, will you join Maharashtra? So I said, I will surely join, ma'am. There is no issue because I'm here for the interview. I am interested. I am a fresher candidate. I'm actually looking forward. So she was like, okay, fair enough. Then my interview process was being done. मेरा interview almost 15 से 20 मिनट चला था. There were candidates
जिनका इंटरव्यू 5 मिनट चला था, देवर कैंडिडेट्स जिनका इंटरव्यू 10 मिनट चला था. इट डिपेंड्स हाउ यू प्रेजेंट योर सेल्फ टू द बोर्ड. सो मैं अगर इंटरव्यू का क्रक्स तुम्हें बताऊं तो इट इज़ जस्ट मेंटली दिमाग खोल के जाना, प्रिपेयर होके जाना. हमेशा आपसे इवेपोरेशन वाला कंसेप्ट, व्हाट इज इवेपोरेशन, नहीं आता है. राइट, इट कैन बी अ लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन, इट कैन बी अ सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन. राइट, सो be prepared, be thorough with your pedagogy subject, and be thorough with the general concept in the life. Right, because teaching is not only about the books and the notebooks, it's beyond that. Then moving ahead, after the interview, we actually had the proficiency test, if I'm not wrong, CPT. If I don't remember exactly the name, but I guess it was CPT only, in which there were three questions given to me. One was I have to prepare a doc. A format of doc was being given to me, and I have to samely make it. It was a question paper. Secondly, there was Excel question. सो एक्सेल में मुझे बोला गया था, एक मुझे कुछ टेबल दी गई थी, कुछ बच्चों के नाम के थे, 10 बच्चों के नाम थे. देन आई हैव टू find the mean median mode, and also after finding that there was a percentile question given to me. 5% मुझे सबका निकाल के एक कॉलम बनाना है, एंड देन आई हैव टू प्रिपेयर अ पाई चार्ट ऑल्सो. सो मेरे केस में क्या हुआ था, आई वॉज नॉट वेरी गुड विद एक्सेल. सो मैंने 5% तक निकाल लिया. मैं पाई चार्ट बना लिया मैंने. आई वॉज ट्राइंग माई लेवल बेस्ट, बट वो नहीं हो रहा था जैसा मैं चाह रही थी. राइट, जैसा उन्होंने मुझे बोला गया था. कुछ देवर सम टर्म्स एंड कंडीशन गिवन टू मी जो मुझे मेरे पाई चार्ट में मेंशन करनी थी, तो मेरा वो उस एग्जैक्टली उस लेवल पे नहीं हो रहा था. So then I calmed myself because there was one more question left. So I said, "Ki, it's okay now. Let's leave it. This is taking a lot of time. My time. I don't have much time." The third question was I have to prepare a PPT. Same 5 to 6 slides. The topic was already given to me, and there were again some context that needs to be mentioned in the PPT. You know, the animation part, the transition part, and there were a slide format and the slide name were also being given to me. So मुझे उसको ढूंढ के फर्स्ट स्लाइड में ये ही आना चाहिए, सेकंड स्लाइड में ये आना चाहिए, थर्ड में ये आना चाहिए, फोर्थ में आना चाहिए. तो इट वाज आल्सो टाइम कंज्यूमिंग. So I left my Excel part and then I moved ahead with this. Eventually, after doing the PPT part, I realized that time is getting over. So I didn't had any time to complete my Excel. So I completed only 2 questions, and then my Excel part was even 50%. 50% only done. So I was like, okay, so I messed up. ऐसी फीलिंग मुझे वहाँ पे आई. देन वी हैड अ टेस्ट ऑल्सो. मेरे स्कूल में एक और टेस्ट हुआ था. काफ़ी स्कूल में ऐसा टेस्ट नहीं लिया जाता है आफ्टर योर ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट. द फर्स्ट फेज दैट यू गिव, उसके बाद नहीं लेते हैं. बट मेरे स्कूल ने वहाँ पे भी एक और टेस्ट लिया था. अगेन इट वॉज वर्बल बेस्ड क्वेश्चन, नॉन वर्बल बेस्ड क्वेश्चन. मुझे भी नहीं पता था दैट आई बी गिविंग ए टेस्ट. सो इट वॉज वेरी जनरल. यू नो, दैट इज़ वॉट आई एम सेइंग, बी प्रिपेयर्ड विद द प्रोसेस. हर स्कूल में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होते ही होते हैं. राइट, सो यू हैव टू बी थॉरो, यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट इनफ कि चलो ठीक है. अगर मेरे साथ बहुत बच्चे ऐसे थे, दे वर सेइंग कि सर हमें तो पता नहीं था टेस्ट होगा नहीं होगा कैसे होगा. बट इन माई केस आई वाज लाइक चलो ठीक है, टेस्ट ही तो है, लेट्स गिव. ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, नंबर ही तो कमाएंगे, उससे ज़्यादा तो कुछ नहीं होगा. एक्सेल में मैंने वैसे गड़बड़ कर दी थी. चलो जोक्स अपार्ट, बट येस, द मोमेंट आई सैट ऑन द कंप्यूटर टेबल, आई रियलाइज येस आई कैन डू इट. यू नो, कुछ क्वेश्चन थोड़े टफ थे, बट स्टिल एक दो क्वेश्चन अगर ख़राब हो गए तो पूरा रिजल्ट थोड़ी ख़राब होता है. ये कंसेप्ट मेरे दिमाग में था. देन आई गिव माई टेस्ट. अच्छे से मैंने पूरा कंप्लीट करके दे दिया. दैट वॉज द होल प्रोसेस of the interview. We had the computer test, we had the CPT, and we had the interview. तीन चीज़ें एक दिन ही हुई थी, बैक टू बैक. पहले इंटरव्यू हुआ, देन द CPT, एंड देन द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट. उसके बाद we came back to our particular accommodations where everyone was, and then it was said कि ओके, सो एंडिंग में ये बोला गया था कि रिजल्ट आपका आ जाएगा. सो बेसिकली हर स्कूल का जॉइनिंग सेशन होता है, दैट इज़ अप्रैल. बट सम स्कूल्स ज्वाइन इन मिड ऑफ द अप्रैल ऑल्सो, बट सम वॉट इन अप्रैल ओनली ही ज्वाइनिंग होती है.
सो अप्रैल से पहले पहले आपको रिजल्ट मिल जाएगा एंड लकीली आई गॉट माई रिजल्ट ऑन 21st of March ओनली. Before that, okay, before the email part, I got a call from the school for the confirmation part. Okay, ma'am, so you want to join to the school or not? So I said, yeah, I'm looking forward. So after that, when the confirmation part was done, the mail was being sent to me that on particular so and so date, you have to join to the school. So I'm looking forward to the joining. So the only thing that I love to say to all of you is it's a process, it's a journey. Enjoy the journey. कुछ ऐसा टेंशन मत लो कि अब ये होगा, अब ये होगा, अब ये होगा. जस्ट नो द प्रोसेस एंड बी थॉरो विद द प्रोसेस. अच्छे से प्रिपेयर करो, हो जाता है. इट्स नॉट इवन दैट टफ, राइट? इट्स ऑल द मैटर हाउ यू प्रेजेंट योर सेल्फ टू द बोर्ड. इंटरव्यू बहुत अच्छा होना इम्पॉर्टेंट है, नो डाउट. सो अपना टेल मी अबाउट योर सेल्फ अच्छे से प्रिपेयर कर लो. एंड second is, you know, be prepared with some questions. Actually there was demo also, but in my case there was no demo taken. उन्होंने मुझसे कुछ क्वेश्चंस ऐसे ही पूछ लिए थे एंड मेरा डेमो नहीं हुआ. मेरे बाकी के साथ जो कैंडिडेट्स थे सबके डेमो हुए थे, बट मेरा डेमो नहीं हुआ. तो मुझे ये फैक्टर भी लगा कि ओ माय गुडनेस, माय आई डिडंट गिव माय डेमो, सो इज इट अ रॉन्ग फेस, इज इट अ नेगेटिव साइन ऑफ व्हाट? बट ऐसा कुछ नहीं है. जिन्होंने डेमो दिया था दे स्टिल okay, so leave that part. So just be prepared with the process, be thorough with the process, and don't worry, it's a journey. Enjoy the journey. अच्छा होता है. Yes, be confident enough. खाली अपने सब्जेक्ट पे फोकस नहीं रखना है. अपने सराउंडिंग में जो भी हैपनिंग हो रही है, have some general awareness also. Why is it happening? What's the cause behind it? And how you will maintain your classroom. That's the very important deal that actually matters. सब्जेक्ट तो हर कोई पढ़ा लेगा. देखो, ट्यूशन टीचर भी जो होता है ना, वो बुक से देख के पढ़ा लेता है. देयर इज अ डिफरेंस इन अ टीचर, राइट? द डिफरेंस दैट मेक्स अ स्टूडेंट a good citizen, a good human being, a good child. You know, you have to ensure the overall development, the holistic development approach to the child. So this is the thing that actually matters. You need to make sure that आप एक डिफरेंस दिखाओ अपने में और अदर कैंडिडेट्स में. अपना बेस्ट वर्जन दो, ठीक है? खाली बुक से रट्टे मत मारना. ऑनेस्टली से अगर आपका सब्जेक्ट अच्छा है, यू विल क्लियर एवरीथिंग. जो ऑनलाइन एग्ज़ाम भी होता है वो भी आपके सब्जेक्ट बेस्ड अप्रोच पे, उसका कंटेक्स्ट ज़्यादा होता है. बाकी तो जनरल अवेयरनेस और द वर्बल एंड द नॉन वर्बल भी रहता है, बट इतना नहीं रहता. आपका चैप्टर सब्जेक्ट वाला ज़्यादा रहता है, तो वो तो आप आराम से कर लोगे. फॉर्म फिलिंग अच्छे से करना, प्रेजेंटेबल हैंड राइटिंग में करना, एंड अटैच द डीए. इंटरव्यू में अच्छे से खुद को प्रेजेंट करो. और अगर कोई टेस्ट, एडिशनल टेस्ट स्कूल ले रहा है, सो डोंट से नो टू इट, गिव इट, गो अहेड, राइट? एंड आई होप माई एक्सपीरियंस surely helps you out, and soon you come up with the flying colors. And definitely the journey is going to be tough, like me, because I'm having my B.Ed examination. I have to join the school, I have to come back, write my B.Ed examination, so it's going to be hectic. But yes, that's the part of life. Life में अगर कुछ struggle नहीं है तो it doesn't mean, right? So all the best everyone. या एंड वन मोर थिंग. सो मुझसे बहुत बच्चों ने, मतलब मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, उन्होंने भी चीज़ मुझसे पूछी थी कि फ्रेशर को हमेशा पीआरटी देते हैं. नहीं, दे ऑफर यू पीजीटी ऑल्सो, दे ऑफर यू टीजीटी ऑल्सो. इट डिपेंड्स हाउ वेल यू प्रेजेंट योरसेल्फ ओवर देयर, how confident you are enough to handle a child of 9th class, 12th class, or even 8th class. So all the best everyone, and I hope this would have helped you out. In fact, if not, so you can pick me up on my Instagram account. I'll surely be available over there. My Instagram account is Monica, MONIKAA_362. So अगर तुम्हें कोई भी डाउट हो, to everyone, please come ahead. I would love to help you out, and this is all about my journey. All the very best to everyone. Thank you so much.